So in our previous class, we had a discussion upon just the elementary idea of what a constitution is. And we just discussed that constitution, when we use the word, also denotes some sort of a legal document, which is more like a law. It's a law of the land. But the importance of the law is that it is considered as the supreme law of the land, which means that we have discussed about different types of laws. So if we have to look at the comparison between all these laws, which law will be supreme? The Constitution. All laws are inferior to the Constitution. Plus, the other thing is that for a law to be valid, which means other laws to be valid, whatever law we have seen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, these laws will only be valid if they are consistent with the laws of the Constitution. So for to be legally valid, they have to be they have to be consistent with the Constitution of India. That is a primary understanding that we tried to make yesterday. Okay. So what I said while we ended the discussion was that for laws to be legally valid, they have to conform to the Constitution. So they should conform to the Constitution of India. इसका मतलब what else can we say? It simply means that if these laws are violative of the Constitution, then they could be declared invalid or void. Okay, so this is basically the argument where we ended our discussion yesterday. Now to move forward, we also have to see how we recognize the Constitution, because it's like just one explanation that we had till now, which is the idea of the Constitution being a law, that to a supreme law of the land. So the next point is what kind of a law we associate with Constitution. Because there was somebody who met me after the class, he was also telling me that Constitution establishes structures of the state, the administrative structures, the political structures of the state. That is also true, but we have to look at all of these one by one. So the next thing that we have to look at in our reading of the Constitution is that our Constitution is an organic law. So if you look at the concept of an organic law, what is organic? Something which is having an organ. An organ can grow, it can actually be diminished also, which means something which can be sustaining life. That is an organic. है ना, जैसे आप पढ़ते भी हैं तो उसमें organic और inorganic के बारे में बात होता है. What is organic? Organic is largely something through which you are looking at an organ which is basically having the possibility of life or livelihood, you could say. So if you look at biology, especially, I'm not talking about chemistry here, I'm talking about biology here. So in biology, anything which is considered as organic, which means it is supporting your life, it is sustaining your livelihood. So what is giving life to this country, to this nation? The Constitution. So what is the organ of the state? What is the organ of the nation? That is given to us by the Constitution, not Constitution. Constitution gives that organ. That is why we say it is life giving. संविधान वो जीवन दे रहा है, संविधान वो ऑर्गन नहीं है, यानी संविधान से वो ऑर्गन निकलेंगे, संविधान वो ऑर्गन देगा जिसको हम मानेंगे कि ये हमारे देश की
प्राण है ना, देश का प्राण है. That is what we need to understand. So organic, when I say constitution is an organic document, or the law of the constitution is basically an organic law, if we are saying this, then I am basically saying it is organic because it is life giving. It is giving life to us. Life to whom? Life to the nation, the state, the country. Why? Because if you see, one of the most important point with the constitutional law, in the constitutional law, you will see that it provides the, and not only provides, it provides and it also establishes the administrative structures of the state. So that is why we say it is life giving. It gives administrative structures to the state. In today's time, if I look at this concept, I can say that there are 3 stages of administrative structure. For example, but who has given this administrative structure? The Constitution of India. What kind of administrative structure I am talking about? So suppose I am talking about administrative structure at union level. So that is union administrative structure. So what are the administrative structure of the union? You could say that there will be union legislature, there will be a union executive, and there will be a judiciary. Although we use the term here in the union, but judiciary is not union or state. Judiciary is integrated that we have. मैं इसके बारे में भी थोड़ी और बात करूंगा आपसे. बट अगर मैं इन 2 चीजों के बारे में आपसे बात करूं कि हमें हमारे देश को, स्टेट को संविधान ये स्ट्रक्चर देता है. ये सब क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि संविधान स्ट्रक्चर देगा तभी तो फिर हमारे देश के पास लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी है. यही तो देश है ना. जब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द इंडियन स्टेट, तो इंडियन स्टेट आपको कोई खड़ा हुआ व्यक्ति तो नहीं दिखता, इंस्टीट्यूशंस दिखती है ना. दैट इज द स्टेट. So what are the 3 basic institutions of the state? Legislature, executive and judiciary. But where does this institution gets their power from? Constitution. Where does this institution owes their origin from? The Constitution. So all powers, functions of these institutions, they derive all their powers and authorities from the Constitution of India. So can we not say that the Constitution of India gives life to the Indian state by building these structures which we know as legislature, executive and judiciary. So you will have in the union and state structure, if I see, so you have union legislature, you have union executive. I'm writing it here judiciary, but there's nothing called union judiciary. ऐसा कुछ होता नहीं है. तो judiciary यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बस Supreme Court, because at the central level there is one Supreme Court of India. ठीक? And what do you see in the union legislature? Rajya Sabha and Lok Sabha. तो हमें ये पढ़ना है, ये हमारा सिलेबस भी है. यूनियन एग्जीक्यूटिव, सो यू हैव प्रेसिडेंट, you have prime minister, you have council of minister and you have attorney general. They constitute the union executive. ये इतने सारे नाम होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है इन यूनियन एग्जीक्यूटिव. सो जब हम भी यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे तो विल बी रीडिंग ऑल ऑफ देम. एंड प्रेसिडेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑल्सो. So what constitutes India's parliament? Lok Sabha, Rajya Sabha and President of India. Why? Because legislature's task is law making and legislature cannot make law on its own until and unless the president has given his assent on the bill. That is why president is also a constituent unit of the Indian legislature. तो legislature में वैसे हाउस कितने होते हैं? केवल 2 होते हैं, राज्य सभा और लोक सभा. तो ये तो सेंटर पे है. स्टेट में आएंगे तो मैक्सिमम स्टेट्स के पास केवल एक हाउस है. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बाई कैमरल लेजिस्लेचर. बाई मींस 2, व्हाइल इन स्टेट इफ दे हैव ओनली 1 विधानसभा वी कॉल इट यूनिकैमरल लेजिस्लेचर.
So there are only 6 states which has bicameral legislature, and that is also because of historical reasons. ठीक है? So this is what we can say is a structure at the union level. Rather we can say at the central level. हम ये भी कह सकते हैं इसको कि ये जो स्ट्रक्चर है, it is basically a structure at the central level. Now the same structure if you have to replicate, because India is also having states, which means power is divided between center and state. So state के context में what are the administrative structure of the state? So same division. You have state legislature, you have state executive, and you have state judiciary. So as I said, now I will also tell you that our judiciary is not center and state specific. Our judiciary is an integrated judiciary. But for the purpose of like understanding right now, we are writing about judiciary at the state level also. So state level judiciary में क्या देखते हैं? High courts and lower courts. You know, this exists. Legislature में bulk of the state is what they have. इसको आप कहते हैं state विधान सभा, which means state legislative assembly. So यही एकमात्र हाउस होता है. मैक्सिमम स्टेट के पास यही एक हाउस है, उसी से सब काम होता है. No? So which means that you will have state legislative assembly, but there are only few states, like 6 states, जहां पर एक और हाउस होता है, which is why only 6 states have bicameral state legislature. Otherwise 22 states have only unicameral state legislature. ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसलिए कि 22 स्टेट्स हमारे हैं जिनको केवल एक ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई है. दे आर कॉल्ड एज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? 22 स्टेट्स. लेकिन 6 स्टेट्स ऐसे हैं, देयर आर 6 स्टेट्स वेयर देयर आर स्टेट असेंबली प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल. तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है. ऐसे केवल 6 स्टेट्स हैं जिनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी उसके पास असेंबली भी है और काउंसिल भी है, विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है. अदरवाइज 22 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर केवल एक राज्य विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है. सो वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? दिस इज कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, some presidencies, some provinces were given additional legislative house. That is, they were given a upper house as well. That is why these states, even after independence, continued to have legislative council. कौन कौन से स्टेट हैं? 6 स्टेट्स के नाम लिख लेते हैं ताकि यहीं से हमें यह ध्यान रहे, ये हम भूले नहीं. So starting from the northern states, so we can say that there is Bihar, which has bicameral legislature, which means they have assembly and council also. अभी आप देखिए बिहार में CM है, but CM is not a member of state assembly. CM is a member of state legislative council. When Yogi ji had become chief minister for the first time, he was not a member of legislative assembly. He was a member of the council. Why? Because when he became the chief minister, he was a sitting MP. Therefore, he did not ask somebody to resign from their seat. He got himself elected in the legislative council. For next term में वो assembly के member बने. So now he is a member of state legislative assembly. I think there have been such examples where you would see so many, like Uddhav Thackeray ji, when he became chief minister of Maharashtra, he was also not a member of legislative assembly. He was also a member of legislative council. ठीक है, तो इसलिए 3 स्टेट तो हमारे सामने आ गए एग्जाम्पल में. तो बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, these are the states which have state legislative council plus state legislative assembly. अब जो states हैं हमारे पास, that comes largely from the southern part of the country. तो southern part में शुरू करेंगे तो आंध्र प्रदेश के पास 2 हाउस होते हैं. अब आंध्र प्रदेश से एक और नया राज्य बना, तेलंगाना. तो इसलिए तेलंगाना को भी bicameral legislature दिया गया. So तेलंगाना also has assembly and council plus कर्नाटका.
ठीक है. So Mysore state, they used to have it from 35 itself. So this is basically the list of states which have a bicameral legislature. लेकिन more or less this is the structure of the India's administrative structure in terms of legislature. Now it comes to executive. तो state executive में कौन कौन होंगे? यहाँ पर थोड़ा nomenclature बदलता है. Head of the state is governor, then you have a chief minister, then you have a council of minister. ये नाम एकदम सेम होते हैं. And you have now, instead of attorney general, you have advocate general in the state. This constitute the state executive. ठीक है. In judiciary we can say we have high courts and lower courts. और lower courts की भी अपनी distinction है. Lower courts में you start with the magistrate court, then district court. I mean, this is the distinction in the lower courts also. Okay. So this is primarily what you have in terms of the structure of the administrative structure of the state. But all of this are conceived as per the Constitution of India. ठीक है. Now, if you see, if you move forward, अब हमारे देश में after the 73rd, 74th amendment, again it is written in the Constitution. That is why I am saying constitutional amendment. So in the original Constitution, we did not have a local self-government like Gram Panchayat, municipality. But after 73rd, 74th amendment, now we have 3-tier government in India. So union, state and local. तो अब हमारे पास post in the post 73rd and 74th Constitutional Amendment Act 1992. मैं CA जब लिखूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आई एम टॉकिंग अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ओके. सो दिस वाज द अमेंडमेंट व्हिच टुक प्लेस. और इसने भी एक नया लोकल लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर दिया. और अब हम इसलिए किस बारे में बात करते हैं? नाउ एट द रूरल एरिया वी हैव पंचायत, दैट इज पंचायती राज. सो पंचायती राज कहां? 73rd से पंचायत आया रूरल एरिया में, इसकी स्ट्रक्चर बनी. और 74th से म्यूनिसिपैलिटी आया इन दी अर्बन एरिया. ठीक है. दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स द structures of the state. So we have the structure of the state in today's time which exists at all 3 levels. At the union level we have one structure, at the state level we have one structure, and in 1992 when we amended the constitution by 73rd, 74th amendment, we also introduced the structure of local self government in India as well. So in the rural area we started with the Panchayati Raj, and if you look at the Panchayati Raj, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया हमने? सबसे पहले बनाया ग्राम पंचायत, है ना, फिर ब्लॉक, और ये कहाँ? ये विलेज लेवल पे है, एट विलेज लेवल, या इसको हम कह सकते हैं एट पंचायत लेवल, पंचायत के स्तर पर. तो कुछ गांव को जोड़कर हमने एक पंचायत बनाया. सो एट द लेवल ऑफ पंचायत. फिर पंचायत से ऊपर जाते हैं, ब्लॉक आता है. ब्लॉक के लेवल पर क्या बना? पंचायत समिति. ये सब पढ़ना है हमें, है ना. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पढ़ना है, और ये तो हमें पढ़ना ही है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशरी ऑल्सो. तो ये जितनी बातें मैं लिख रहा हूं, दिस आर ऑल योर सिलेबस ऑल्सो. ऑल ऑफ दिस हैज टू बी रेड कॉम्प्रिहेंसिवली. पंचायत समिति, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम कहते हैं जिला परिषद. ये लिखा हुआ है 73rd अमेंडमेंट में. तो उसने भी एक लोकल लेवल का स्ट्रक्चर बना दिया अबाउट हाउ यू विल बी लोकली बेसिकली परफॉर्मिंग ऑल दीज एक्टिविटीज ऑफ यू कुड से गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड थिंग्स लाइक दैट. 74th में हमने अर्बन सेंटर्स की बात की, और अर्बन सेंटर्स पे जो कॉन्सेप्ट आया उसको नगर पंचायत का कॉन्सेप्ट आया, म्युनिसिपल काउंसिल का कॉन्सेप्ट आया, है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट आया, बेस्ड ऑन सर्टेन population criteria we have demarcated. So this is basically
the reading that we need to have in our mind, that who gives all these structures to the Indian state? It's the Constitution. So we say that our Constitution is also an organic law, because it is the Constitution which creates organs of the state. The organs of the state being the legislature which means the law making organ of the state, the executive, that is the law enforcing and implementing agency of the state. In that particular part, you will also come when you qualify the examination, because you will be bureaucrats, and bureaucracy is part of the executive. So political executive is like non-permanent executive, but you will be more like a permanent executive, but you are also tasked with law implementation, law enforcement, and finally you have judiciary, who is doing what? Who is basically interpreting the laws and basically trying to enforce these laws. So executive are law implementers, judiciary is law interpreter and enforcer, so that justice can be served. Nobody like a executive or a legislature does something which is against the values of the Constitution. मैंने क्या लिखा? All laws to be valid, it has to conform, it has to be consistent with the Constitution of India. तो ये बात तय कौन करेगा? लेजिस्लेचर तो कानून बना देगा, उन्होंने कहा हमने जो बनाया वो सब ठीक है। सरकार कभी कहेगी हमारा कानून में कोई दोष है? एग्जीक्यूटिव ने अपनी मनमानी कर दी, बिकॉज यू हैव गॉट इमेंस पावर। तो फिर my rights are violated, maybe the law is illegal, maybe the law is not conducive to the Constitution, spirit of the Constitution. Who will actually go and say that no, this law cannot be operational in the country, this law is invalid, and this person cannot be tried under this particular law? Or if somebody is basically doing something which is law making, law implementation, and if the law, if the implementation, anything is against the spirit of the Constitution, values of the Constitution, the ideas of the Constitution, then it is the judiciary who is going to be the protector in such a scenario, protecting us from any sort of the executive or legislative aggressions, accesses. That is why we need to have these institutions. But these institutions are not created by someone. These institutions come into origin because it's the Constitution which has created it. तो अगर संविधान ने कुछ बनाया है, वो बड़ा है, या जो चीज संविधान ने बनाया है, जिस ऑर्गन को बनाया है, वो संविधान से बड़ा है? क्या बड़ा होना चाहिए? यानी जिस चीज से किसी ऑर्गन का जन्म हुआ, एजेंसी का जन्म हुआ, जन्म देने वाले से तो बड़ा नहीं हो सकता। यानी कभी भी पुत्र या पुत्री अपने मां बाप से बड़े हो सकते हैं? हाँ? अगर हो गए तो फिर क्या होगा? कलयुग भी नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा। So the idea is very simple. You have to understand that you are talking about the concept here, क्योंकि अभी मैं बात करूंगा about the word supremacy of the Constitution. So why we say that the Constitution is supreme? It's because of this that the Constitution is supreme. Because even logically, when you construct this argument, anything that derives its power and authority cannot be greater than, superior to, or bigger than that document or authority from which they are deriving, or through which that is the source of their power and authority. So something which has created something, established something, given something the power to do something, I mean that institution cannot be superior to the source through which it is deriving its existence and authority. That is why we say we have a supremacy of the Constitution in India. ठीक है? अब जुडिशरी के बारे में मैंने जैसे बार बार आपको कहा कि जुडिशरी को हम यूनियन और स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बांटते नहीं. It was just for the sake of convenience that we wrote the names of some judicial institutions at the union level and at the state level. यानी local government में भी आप देखो बन गए हैं कुछ judicial organs, है ना? यानी local self government में भी अब आज के समय में कुछ judicial authority दे दी गई है. And we have so many courts which come into existence, which have come into existence to provide justice at the local level also. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, उस बारे में भी बात करेंगे. अभी हर स्टेट में इस तरह से नहीं बना गया है, लेकिन कोशिश हो रही है कि जितनी ज्यादा जुडिशरी को डिसेंट्रलाइज किया जाए उतना अच्छा है. बिकॉज इफ यू वांट जस्टिस इन द कंट्री यू हैव टू गो टू अ पर्टिकुलर प्लेस. जस्टिस इज वेरी सेंट्रलाइज्ड. वन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट.
So everybody has to go to that court. Now the problem is in the village. So why can't we resolve the issue in the village? Can we do that? तो पंचायती राज में भी अब इस तरह के लॉज बन रहे हैं जहां हम कोशिश कर रहे हैं टू एक्चुअली फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, व्हिच मींस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशियल पावर्स एज वेल. So we are finding so many alternative dispute resolution mechanism. That is itself pushing for decentralization. But even in the panchayats also we have some ideas which we are coming up, like the sarpanch. Sarpanch has been assigned some judicial powers also, which means he can go and try to resolve disputes that may emerge between two parties. Some small, petty, civil nature dispute, these things are still resolvable. Why? Because we want that dispute should be resolved at that particular place from where it has emerged. It's not as if the dispute has emerged from this place, and to resolve this dispute you have to go 100 kilometers, and then you have to hire somebody whom you pay fees, and then you say, this is my dispute, try to resolve it. And then there is a third party sitting there and he is resolving your dispute. Gandhi was quite against such an idea, and therefore Gandhi was a great proposer of the idea of a decentralization of power. And so Gandhi vision was a Panchayati Raj based political power in India. Gandhi wanted that village should have all the power. We don't have the same vision in the 73rd, 74th Amendment for sure, because we have given very less powers to them, or rather, roughly no powers to them. But that does not mean that we have not created a unique or a new structure in place. There is a new structure. That's why we say that today we have structures of the state divided at all three levels. That is union, that is central, state and local level. So we have such an idea. So जुडिशरी को कैसे समझना होता है, वो जुडिशरी में हम एक बार इस बारे में फिर से बात करेंगे. बट क्योंकि अभी हमने जुडिशरी शब्द लिखा है, तो हमारे यहाँ जुडिशरी सेंटर, स्टेट और लोकल में डिवाइडेड नहीं है. हमारे यहाँ जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, दैट इज इंटीग्रेटेड, यानी जुडिशरी एक दूसरे से जुड़ी हुई है. क्यों जुड़ी हुई है, कैसे समझ सकते हैं इसको? तो बस ये ऐसे पिरामिड स्ट्रक्चर याद रखिएगा. इस फिगर से आपको ये बात समझ में आ जाएगी. जुडिशरी कहां से शुरू होती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं जो एकदम लोएस्ट जुडिशरी आपके पास होती है. हालांकि नाम इसके अलग अलग है, हर स्टेट में मुंसिफ और इस तरह के कोर्ट्स भी कहते हैं. हम इसको एक सिंपल नाम देंगे, जो जनरल नाम है सिविल कोर्ट. जितने भी सिविल मामले हैं वो सबसे पहले कहां जाएंगे? सिविल कोर्ट में जाएंगे. और जितने क्रिमिनल मामले होते हैं वो जाते हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, है ना. तो ये क्रिमिनल इश्यूज और क्रिमिनल नेचर ऑफ डिस्प्यूट्स, दे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीच द मैजिस्ट्रेट कोर्ट. दिस इज द इंटीग्रेटेड सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम दैट वी हैव इन आवर कंट्री. यहां से हमारे पास बनता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखो मैंने सिविल के ऊपर लिखा है, यानी सिविल मामले की अपील कहां होगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी. और क्रिमिनल मामले की अपील कहां होगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर. उसको कहा जाता है सेशंस कोर्ट. सेशंस कोर्ट ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब सिविल मामले को सुनता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब क्रिमिनल मामलों को सुनता है तो वो सेशंस कोर्ट कहलाता है. दैट्स बेसिकली द डिफरेंस. देन नाउ वेयर डू यू गो फॉर अपील? फ्रॉम दिस कोर्ट एंड दिस कोर्ट. ये हर जगह के लिए सिमिलर है, हाई कोर्ट्स. And every state has got their high court. So every state has lower court, every state has district court, every state has high court. You go in the form of appeal. Integrate हो गया. But after high courts, ये जितने high courts हमारे देश में है, हर state में है, तो ढेर सारे high court होंगे, ढेर सारे high court. But all state high courts, they can come for an appeal in the Supreme Court. So we can't say that we have a judiciary which looks divided between center and state. We can say that our judiciary is integrated into the top level, which is the Supreme Court of India. Okay? That's how we have created this model. Okay? So समझाने का मतलब हमें बस एक पॉइंट यहां समझना था, that constitution is basically an organic law. Why it is an organic law? Because it gives life to the state, because it gives structure to the state. So what structure? All administrative and judicial structure of the state owes their origin from the Constitution of India. ठीक, ये दूसरा पॉइंट था. थर्ड पॉइंट इज दैट Constitution enjoys
special legal sanctity. What does this mean? Special legal sanctity. ठीक है, तो यहां हमें समझना होगा थोड़ा प्रिंसिपल्स, जिसकी वजह से बाद में हम डेमोक्रेसी और ऐसे शब्द पढ़ेंगे. बट आई शुड टेल यू वन थिंग, दैट in any country where there is democracy, it is believed that the ultimate sovereignty lies with the people. सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है प्रजातंत्र में? हाँ, प्रजा. हाँ, मुझे लगा प्रशासन कह रहे हैं, इसलिए आप प्रशासन में जाना चाहते हैं. प्रजा यानी हम लोग, हम ताकतवर हैं, सारी शक्ति हमारे पास है. वैसे हम काफी कमजोर हैं, लेकिन सिद्धांत के आधार पर, थियरी में हमसे ताकतवर कोई नहीं है. ठीक है, तो इसलिए हमारे यहां आम और खास होते हैं. जो खास है वो बड़ा ताकतवर है, जो आम है वो अमरूद के बराबर भी नहीं है. जो आम है वो आम ही रह जाता है बेचारा. अब ये तो एप्लीकेशन है, लेकिन थियरी में ये माना जाता है दैट पीपल आर अल्टीमेट सोवरेन इन डेमोक्रेसी. तो सबसे पावरफुल, सबसे लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन क्या होगा? which derives its power and authority from the people, not from any source. ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव पे आ गए. ये अभी भी उसी में खोई हुई है. प्रशासन में जाना है, एकदम तय है, पावर के लिए जाना है ना, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है. और देश सेवा है. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. ठीक है, गदगद हो गया मेरा मन सुन के. सो people are ultimately sovereign in democracy. So now the question is that when we look at constitution, मैंने देखो हेडिंग में क्या लिखा कि it is only constitution which has a special legal sanctity. Legal sanctity मतलब I am trying to now connect constitution and I am trying to ask this question. For example, I told you that the source of authority of the legislature is what is the source of the authority of the Indian legislature? Which means, where does the authority of legislature comes from? Where does the authority of the executive comes from? Judiciary. Which means you know the source. Now I am asking the same question, because I say that this is a legal sanctity, it's a legal document, and the legal document says that this will be your power, this will be your authority. So very well understood that all these institutions are established, created and given their respective domain power by the Constitution of India. That is why they are all legitimate authority. हम कभी कह सकते हैं कि नहीं ये legitimate है, मैं नहीं मानता इसको, सरकार ने जो कह दिया मानना पड़ता है. कल भी मैंने ये बात कही थी. अब दूसरी बात आती है कि संविधान को सैंक्टिटी कौन देता है? पीपल ऑफ इंडिया, है ना. वाई? क्योंकि अगर आप संविधान की प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है? On this day, 26th of November 1949, we give to ourselves this constitution. Which means, preamble जब लिखा गया तो the makers of the constitution wanted to make this very clear or amply clear that we have to ensure that whenever this question comes about the constitution, then we are going to give special legal authority to the Constitution of India, because it is only the Constitution of India directly from the people of the India, while all other institution derives their power and authority from Constitution of India. That is why it is the Constitution only which has these special legal sanctity or the special legal authority. तो बहुत sanctity है Constitution की और special legal sanctity है. Legislature की भी है, executive की भी है, judiciary की भी है. But in democracy we say that there is nothing more bigger than the people. So people are directly giving the authority to the Constitution of India, which means their legal sanctity is far more bigger than those legal institutions that the Constitution would itself create. That is why it is the only law, which is the Constitution law, which is deriving its authority directly from the people, while all other authorities are deriving their powers and authorities not directly from the people but through the Constitution. That is why the Constitution is supreme and it has a special legal sanctity as well. ठीक है,
देखिए, it is only the constitution, it is only the constitution which derives its authority directly from the people themselves, since people are ultimate sovereign in a democracy, people are ultimate sovereign in a democracy. So when we will look the word democracy, then we will again try to understand these concepts more comprehensively. Therefore, full stop, therefore, Constitution enjoys a special legal sanctity full stop. Next point. जब भी मैं next point बोलूं तो आपको क्या करना है? You have to just put a small dash and then write the next point so that you understand that from here we are changing the point. On the other hand, the institutions of the state, like legislature, comma, executive and judiciary derives their power and authority from the Constitution. Derives their power and authority from the Constitution. That is matlab IE. So that is it receives legitimacy indirectly from the people. Legitimacy indirectly from the people. Full stop. So they have legal sanctity. But not, क्या नहीं है इनके पास? Special legal sanctity. They have legal sanctity but not special legal sanctity. Okay, so this is what we would derive in these structures and in this overall understanding of the Constitution. Then one of the major points of analysis with the Constitution is that the Constitution, what establishes a relation between the state and the people? How are people related to the state in today's time? हम लोगों को क्या कहते हैं? What do we call the people? Citizens. But how do you know that you are a citizen? Which means it's about the Constitution again, which means who has established the relation between the state and the people. So relation between state and the people is largely understood from the point of view of citizen.
So there are so many things that the state is going to give to its citizens, welfare, rights, duties, and something which would be only specific to citizens only, because rights can be given to non-citizens also. But there will be something which would only be specific to citizens. So anyone who wants to become a president of India, I mean, if you are a non-citizen, you can't become a president of India. If you want to vote in this country, वैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं who are non-citizens also, but you can't do that as per the constitution, because I mean the constitution says that only citizens have the right to vote in this country. They will have the right to franchise. So that's why I'm saying that when a nation is not a democracy, then how do you look at the relation of a person with the state? For example, it's a monarchy. Monarchy में citizen होते हैं, हाँ, प्रजा होती है. क्या रहते हैं आप लोग? प्रजा, यानी सब्जेक्ट्स होते हैं. सब्जेक्ट्स का मतलब क्या? कि आपके पास कोई राइट्स नहीं है, आपके पास ड्यूटीज बहुत सारी है. तुम्हारा ये कर्तव्य है राज के प्रति, हाँ, तुम ऊंची आवाज में राजा से बात मत करो. तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम जब भी राजा आए तो सर झुका दो, हाँ, या अगर लौट जाओ तो और भी अच्छा है. So whatever it is, you are talking about subjects. Subjects have no rights. There is always duties. भर भर के बोरी में भर भर के ड्यूटी दिया जाएगा. But the moment you become a citizen in the modern world, you see that you have huge amount of rights and very less duties. If you look at the liberal countries in the West, there is no concept of duty. फंडामेंटल ड्यूटी जैसा कोई चैप्टर ही नहीं है वहां. हमने तो फिर बाद में जोड़ दिया संविधान में. हमारे भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो चैप्टर ऑन ड्यूटी. फंडामेंटल ड्यूटी कुछ नहीं है, फंडामेंटल राइट्स है, अधिकार दी गई है आपको, है ना. तो इसलिए ये प्राइमरी डिफरेंस होता है. मॉडर्न वर्ल्ड में, इन द मॉडर्न स्टेट, यू आर सिटीजन एंड सिटीजन हैव मोर राइट्स देन ड्यूटीज. In the pre-modern times, when there was monarchy, there was more duties than rights, and we were not citizens, we were subjects. That's the primary difference. So can we not therefore say that the constitution as a law also is instrumental in establishing the relationship between the state and the people of the state? That is what we know as the concept of citizenship. ठीक है. तो सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप इज अ लीगल रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विथ हिज और हर स्टेट. ओके, सो एस्टैब्लिशेस इट कॉन्स्टिट्यूशन. लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशन establishes the legal relationship between the state and the people. So what is that called? That is called citizenship. But this is created by the Constitution. That is why if you look at part 2 of the Indian Constitution, it talks about the concept of citizenship, and it tells you the different ways and means through which you can acquire citizenship in India, or you can lose if already you have a citizenship in India. So can we not therefore say that if India has to exist as a state, as a democracy, or as a political system, all of this that I have just spoken requires that there has to be a constitution which will ensure that India will continue to exist as a political unit, as a political system. Because if you just take out the constitution, then it's very difficult for the existence of a political system in a country or in any country, especially when we are talking about our country, that is India. So constitution therefore is also central to the existence of India, or a continuous existence of India as a political system. Okay? That is also one basic point with regards to the Constitution of India. So Constitution is central to the existence of India as a political system. Okay. So this is something which we can look forward in our reading or understanding of the
Constitution of India. So Constitution is very crucial. If you don't have a Constitution, you will still struggle for the existence of a political system in India, because there have been times when the Constitution has been either violated or overturned, or people have put up certain restrictions, and therefore you would see that there was a great deal of question mark which was raised in those points about the continuation of India as a democratic political system, especially during the emergency eras. If you see, when the Constitution and the spirit of the Constitution was very strongly subverted by the executive, and there we see the predominance of executive in those times, where we actually played with the idea of India as a political system. That is where Constitution was very crucial. But how did we find the solution to that problem? The Constitution itself gave us the solution. So whatever excesses was made by amending the Constitution under 42nd Amendment Act, everything was restored by 44th Constitutional Amendment Act. तो अगर संविधान को यूज करके हमने संविधान को सबवर्ट किया, उसका गला घोट दिया, तो संविधान को ठीक करने का उपाय भी संविधान में ही था. उसी अमेंडमेंट से हमने फिर संविधान की मर्यादा, गरिमा रिस्टोर भी कर दी बाय 44th amendment to the Indian Constitution. Okay, that's what we have understood. So that is basically a small introduction on the idea of a constitution. Now the second part of the discussion is more about how do you classify the constitution. Classification could be many. There are so many different ways in which constitution is classified. But we are going to classify constitution into certain type, as per the demands of the syllabus and the paper. So, for example, there is a very popular classification of constitution. If you see, it is called as, constitution is either classified as a parliamentary और अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. ये दो बड़े पॉपुलर क्लासिफिकेशन है. तो बहुत सारे देश हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में चलते हैं. वो क्या है ये हमें समझना है. हम खुद पार्लियामेंट्री सिस्टम में, लेकिन हम ऐसा संविधान हमने बनाया है विच हैज आल्सो सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द फेडरल टाइप, फेडरल सिस्टम. ठीक, तो कहने का मतलब है कि ये सबसे पॉपुलर एक क्लासिफिकेशन है विच इज कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री और फेडरल, या इसको ये भी कह सकते हैं, पार्लियामेंट्री अगर लिखा है तो ज्यादा बेहतर शब्द है प्रेसिडेंशियल, है ना. और इसी में जो एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ सकता है हमारे लिए, क्योंकि मैंने फेडरल शब्द जब लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन जो ग्रेट ब्रिटेन है, और यू आर टॉकिंग अबाउट अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो यूएसए है. और यूएसए देखिए प्रेसिडेंशियल है और ब्रिटेन इज पार्लियामेंट्री. तो क्लासिकल लेवल पे पार्लियामेंट्री फेडरेशन, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन आर लार्जली यूनिटरी इन नेचर. दे ऑलवेज क्रिएट व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेयर देयर इज यूनिटरी मतलब एक यूनिट, यानी वहां पर केवल एक गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक, तो इट्स अ यूनिटरी गवर्नमेंट. But when we say federal government, which means government at two levels, one at the center, the other at the province, the state, the subunits, whatever you may say. That's the idea. So precisely if you see, this has been the most popular classification classically, the manner in which we have tried to understand constitution. But we cannot say that this is a typical ideal type, because there is a great deal of mixture. You can have a parliamentary form of government and you could still introduce elements of federation in it. And we have been such a constitution. We have done it, and we have done it remarkably well. That is why we are still sustained. We are still sustaining ourselves. It's been more than 70 years, and I think the constitution has served us well. It has moved us from strength to strength. Because if you look at other countries which are just around us, and if you see the kind of problems that these countries have engaged into, plus the number of times they have tried to play with their constitution, I mean, in that sense, we could say that our record has been exemplary when it comes to working of the constitution in India. So, although classically this was the idea which was classified
So primarily it was believed that if you are a parliamentary system, then a unitary form of government is more suitable to the parliamentary system. Why? Because in parliamentary system, there is not supremacy of the constitution, there is supremacy of the parliament. ये बात होती है उसमें. अब भारत ने तो ये कह दिया कि अभी मैंने आपको समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया उससे सुप्रीम हमारा संविधान है. तो हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा ना, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो है दैट वी आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए इसके बाद जो हमें समझना है, जो और दूसरी वैरायटी है क्लासिफिकेशन की, वो है द आइडिया ऑफ अ written constitution and a unwritten constitution. So primarily what we do or what we see here is two things. जैसे written और unwritten के बीच में जब भी बातचीत होती है तो लोगों को क्या लगता है कि unwritten constitution would mean oral constitution. ये कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो मन में आया बोल दिया वही संविधान हो गया. वो oral constitution होता था माहिष्मति में, मेरा वचन ही है शासन. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. वो मोनार्की में हो सकता है कि सारी जो बातें लिखी हुई है सब एक तरफ, और राजा ने खड़ा होकर कह दिया कि मेरा वचन ही है शासन, वही चलेगा शासन में. लेकिन जैसे ही आप लीगली गवर्न करने लगे ना दुनिया में, जब मॉडर्निटी आ गई तो कानून की वैल्यू होने लगी. क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आया, इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कि देश में ना मेरा राज ना आपका राज. किसका राज? कानून का राज. ये हमें फंडामेंटल राइट्स में पढ़ना है, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ एज वेल. तो एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ. तो आर्टिकल 14 में हम पढ़ेंगे, इस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, तो फिर मैं उस बारे में आऊंगा. लेकिन अभी जो समझाना है मुझे वो ये है कि रूल बहुत इंपॉर्टेंट था. रूल का मतलब लॉ, उसी बात को हम कानून कह रहे हैं, यानी नियम, कानून, नियम या कानून ऐसे बोलते हैं ना हम लोग. सो लॉ इज वेरी क्रूशियल. इट इज द लॉ विच विल डिफाइन कि what can be done, what cannot be done, what will be your power, what you can do. So once I say that your power is defined, which means under that definition we know that what you will be able to do and what you will not be able to do. But when it is monarchy, you can't limit the monarch's power. Monarch has unlimited power, है ना. बच्चन साहब सहनसा में कह रहे हैं कि खुद कानून है सहनसा, मुजरिमें खुद पकड़ता है, उन्हें खुद चुनता है, दलीलें खुद सुनता है, फैसले खुद सुनाता है. What does it mean? Legislature, executive, judiciary all merged into one. थोड़े लंबे भी थे तो ज्यादा चीजें उनमें आ सकती थी. So what does it mean? This is typically the idea where all powers into one institution. इसको कहते हैं हम आज के समय में, which we say as an idea of government, which is basically saying that this is a recipe for dictatorship. Why? Because it is authoritarianism, where all authorities are vested in one institution. जब शहंशाह के पास सारी अथॉरिटी है कि वही कानून है, वही दलील भी सुन लेगा, वही फैसले भी सुना देगा, वही जल्लाद भी है, सजा भी दे देगा, तो फिर इसका मतलब है देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर. मॉडर्न वर्ल्ड आया तो मॉडर्न वर्ल्ड ने कहा कि नहीं, पावर अलग अलग जगह होगी. तो भी हमें समझना है ये सब चीजें, सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया आया. ये सब जेनेसिस है जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आइडियाज को जन्म दिया. Even in our constitution or even any constitution that you see in the world, what do you see? A very prominent idea. If you are a democracy, if you're not a democracy, then you're not talking about any of these things that we are talking about right now. But if you are a democracy, then you can't give all powers to one institution. Your different power will be separated in different institutions. So legislature will make law, but legislature will not implement those laws. That's not legislature's power. And the person who will implement the law, he will not be the enforcer of the law. तो मतलब आपने जुर्म किया और आप ही वकील, आप ही बन गए जज, तो कभी सजा होगी? हाँ? केस लड़ने के लिए आएगा, वो कहेगा अच्छा मेरे खिलाफ केस लाए हो और 20 साल की सजा दो इसको, इसने गुस्ताखी की है. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू सेपरेट पावर. तो जिसको जजमेंट करना है वो लॉ इंप्लीमेंट नहीं करेगा, लॉ इंप्लीमेंट वाले गलती करेंगे ना. तो जिसने गलती की है उसको सजा सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन देगा, सेपरेट इंस्टीट्यूशन देगा, और ये सब एक दूसरे से अलग होंगे. अमेरिकन्स अंडरस्टूड इट्स क्वाइट वेल. That's why they, in their classic constitution, that is America's constitution, is the first written constitution in the modern world. And you can say that America was like the country which has its first written constitution. And so they gave us so many food for thought. The manner in which they designed the constitution, they created the constitution, they organized the constitution.
So that is why some countries like America, they had to write a constitution, but there was another country like a Great Britain, it never wrote a constitution. So wrote means what? It does not mean that there were no written laws, rules, regulations. In Britain also there are written rules, there are written regulations, but those rules and regulations which will operate the country or operate the different institutions of the state, they are not codified into one book. That's the only difference. जैसे आपने कोई रिसर्च का पेपर लिखा, पीएचडी की थीसिस लिखी आपने, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, बिब्लियोग्राफी, शुरू में लिखा इंट्रोडक्शन, सब एक्नॉलेजमेंट, सब कुछ लिख दिया, चैप्टराइजेशन सब कुछ कर करा के दे दिया, लेकिन जब तक आप उसको एक किताब में बाइंड नहीं कराओगे, आपकी थीसिस सबमिट होगी नहीं होगी. तो जब आपने किताब में बाइंड कर दिया तो आपकी थीसिस है, और जब तक आपने बाइंड नहीं किया, दैट इज जस्ट चैप्टर, नॉट अ थीसिस. दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ रिटन एंड अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अब सवाल ये होता है कि फिर ब्रिटेन ने क्यों नहीं कोडिफाई किया आज तक? सो यू हैव टू लुक एट द सर्कमस्टांसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. ब्रिटेन को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी टू कोडिफाई इट. When you do something like India got its independence in 1947, by the time there were so many countries which had a written constitution. So India also said that we'll also make a constitution because we also need rules, regulations, powers, functions, authorities, and we should define it. So there should be a law, supreme law of the land. So we will sit, we will make a constitution. And so we had a written constitution. So we made a constitution. We codified all the law into one book. So now it is one book. That is why in that book you can say that, okay, there are 390 articles, there are 12 schedules. Then you can say that, okay, fine. If you move further, you will say that there are, multiple amendments that have also taken place. Organic document hai, to humne amendments ko bhi allow kiya. And then you could say that you had all of these articles, schedules codified into one book. That is the Constitution of India. किसी ने ये सारी बातें लिखी है, but that is separate document. So rights के document separate है ना, किसी और चीज में सरकार लेजिस्लेचर की एक डॉक्यूमेंट है बट सेपरेट है, कितनी पावर होगी, अथॉरिटी होगी उनकी. एग्जीक्यूटिव की एक डॉक्यूमेंट है बट दैट इज सेपरेट, which is not codified. That's the only difference between written and an unwritten constitution. तो यहीं पर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि written का मतलब है codified into one document. And this is unwritten matlab this is not codified into one document. That's the basic difference between a written and a unwritten constitutions. Okay? तो इसका मतलब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. वहां पर सारी बातें हैं, लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, दैट इज ऑल्सो अ लॉ, बट इट इज एक्चुअली unorganized. It is all distributed, dissipated. But here everything is codified. That is why you know that the constitution is divided into different parts, different schedules, and there are all these different articles that you can see. So that if you want to search something in the constitution, you just have to go to that particular schedule, part or article and you will find that. So everything is under one book. तो इसलिए भारत के बारे में कुछ भी जानना है, बस एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोल के हम उसको देख सकते हैं. Can't be the same with countries which have unwritten constitution, because if you ask them, give me a constitution book of the constitution, they will not have one. So they will say that we don't have one, but it does not mean that we are not running on rule of law. लेकिन इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी रिटन और अनरिटन को समझने के लिए. तो पहले कोशिश करते हैं हम लोग इस आइडिया को समझने का, देखने का कि हाउ आर वी बेसिकली differentiating between the two ideas if you have a written constitution and if you have a unwritten constitution. तो पहली बात आपको समझ में आ गया. तो मैंने लिखा हुआ इसका मतलब यह होता है कि all the legal provisions are codified into one document. That is about the written constitutions. Okay, but the same cannot be said about unwritten constitution because they will have multiple documents. मतलब बहुत systematically arrange नहीं करते, इनके पास multiple documents हैं and they are not codified into one single documents. But they also have legal provisions. ऐसा नहीं कि इनके पास legal provisions नहीं होते.
So legal provisions are not codified into a single document. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, they are not systematically arranged, which means they are not arranged systematically. That is why, even though it is also a legal document with legal provisions, but they are not very well organized. While if you have a constitution, which means you have organized everything like a book. जैसे किताब में होता है ना, अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, किताब के अलग अलग पार्ट होते हैं. पार्ट 1 में एक खास नेचर के चैप्टर्स होंगे, पार्ट 2 में खास नेचर के चैप्टर्स होंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसे ही किताब की तरह है. इसकी एक शक्ल जो है वो कैसी है, इंट्रोडक्शन किताबों में होती है, प्रीएम्बल को आप इंट्रोडक्शन मान सकते हैं, है ना. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो द सेम. इट्स मोर और लेस लाइक अ बुक वेयर एवरीथिंग इज वेरी सिस्टमैटिकली अरेंज्ड, कोडिफाइड, you know, in parts, in schedules and in articles. That is what we can see in our constitution being arranged. जैसे अगर आप written constitution में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दें, जैसे मैंने इसमें लिखा कि they are not systematically arranged, तो यहां हम क्या कह सकते हैं, they are systematically arranged. And why do I say they are systematically arranged? So look at our own constitution. So can you tell me how many parts we have in our constitution? So we have 25 parts. Very systematically arranged. You know the number of counts. How many schedules we have in our constitution? So we have 12 schedules in our constitution, which means very, very systematically arranged. And if I look at the number of articles that you have in our constitution, how many articles you have in our constitution? 512 articles. ये नंबर कहां से आया? articles. Yeah. But articles have increased, but the number have not increased. So you say, somebody says 450 articles, 460 articles, or 460 plus articles. It does not mean that you have an article 400 of the Constitution. You have article 401 of the Constitution or 402 of the Constitution. Articles have been added within 395. उसमें एक नया मान लो कैपिटल ए जोड़ दिया, है ना, तो उसमें कैपिटल ए जोड़ दिया किसी आर्टिकल में, जैसे 51 कैपिटल ए, न्यू आर्टिकल हैज बीन एडेड. ऐसे करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन में काफी आर्टिकल्स ऐड किए हैं, मोर देन 50-60 आर्टिकल्स, बट वी हैव नॉट चेंज द नंबर येट. तो हमारे पास नंबर के हिसाब से अगर हम आर्टिकल देखेंगे तो कितने आर्टिकल्स हैं? We have 395 articles. ठीक है, that's basically what we have done with our constitution. Written constitution का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, so USA is that classical written constitution model. भारत भी written constitution में आएगा. उसके एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं USA, the first written constitution of the modern world, and then India. So I can't say that USA is the first constitution of the world because there are so many references from the ancient era where, especially if you look at the Greek philosophies, Aristotle has compared so many constitutions of the world. So Aristotle has done a comparative study of different constitutions. So if he would compare different constitutions of the world, it would mean that primarily we could say that there existed constitutions in the world, but in the modern world, we have the first reference that comes from United States of America, which they had a written constitution in place. वहीं दूसरी तरफ अगर हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं तो हमारे पास क्या प्राइमरी एग्जांपल है ना, यूनाइटेड किंगडम. आई मीन दे आर द वंस हु हैव अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. फिर इन्हीं के जैसे कुछ और देश हैं, न्यूजीलैंड, दे आल्सो हैव अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस. तो ये, बट अनरिटन इज नॉट एन ओरल कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि जहां कोई बात हुई तो हमें क्या कहना है, तो हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है. ठीक है, अब थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं कि अगर रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा भेद करना है तो एक सबसे बड़ा अंतर क्या होता है कि कंट्रीज विच हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोज कंट्रीज ऑल दीज आइडियाज आर इनैक्टेड. इनैक्ट का मतलब क्या होता है? विच मीन्स हाउ यू ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस.
So constitution came into being. But how did constitution come into being? Because it was enacted by one assembly. That was a constituent assembly. है ना? इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज जब इनैक्ट होती है तो उसको ओरिजिन में लाया जाता है, उसको बनाया जाता है. इफ यू आर क्रिएटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन तो कहते हैं फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. सो यू नो कंट्रीज विच हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कि कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ. सो इट हैज अ डेफिनेट बिगिनिंग एंड अ डेफिनेट एंड. You know that if you have a written constitution. But if you have an unwritten constitution, it is constantly evolving. It does not mean that our constitution is not evolving. More than 100 amendments we have done that shows that our written constitution are also evolving in nature. But unwritten constitution are not enacted because you don't sit and you say that this is our constitution that we have framed. वहां कोई constituent assembly कभी बनती नहीं है. वहां पर जितनी चीजें हैं, those are documents which have evolved at different points of time. For example, in UK we say that the evolution of the constitution begins from a very ancient document of 13th century which was Magna Carta 1215, where the king had some sort of agreements with certain aristocratic class in terms of certain rights which the king accepted for those people and the people in that particular realm. So Magna Carta is a document. Then there is a constant struggle between the British monarchy and the British Parliament. Why? Because in Britain there was industrial revolution, because Britain is also the seat of industrial revolution. After industrial revolution, you see the emergence of a new class of people. Who are these class? The capitalists, the merchants, and they become very, very progressive section of the society, which means they had wealth. Now what they demanded? They demanded more say in governance, lawmaking, administration. But Britain is still a monarchy. So monarch would not give that. They would say, no, everything will be done by us. So there is parliament, there is representation, but they have limited powers. So there is a struggle between the parliament and the monarchy. लड़ाई होती है. And then after this struggle, what emerges out is basically what we know as a very prominent document, जिसको कहा जाता है the document of Bill of Rights 1689. तो ये उनकी ग्रोथ है, उनकी हिस्ट्री है. तो अगर वो राइट्स देखेंगे तो कहां से देखेंगे? बिल ऑफ राइट्स इज देयर फर्स्ट डॉक्यूमेंट. उसके बाद भी उन्होंने बड़े सारे डॉक्यूमेंट बनाए होंगे, पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन बनाया होगा. बट आफ्टर दिस व्हाट वी सी दैट ब्रिटेन एक्चुअली मूव्स मोर टुवर्ड्स अ सिस्टम वेयर the parliament is gaining some sort of power vis-a-vis the monarchy. So countries which have unwritten constitution, the basic difference is that in these countries, the constitution is never enacted. The constitution is always in an evolutionary mode. There are documents after documents after documents which are constantly leading to the addition in the rule, in the law, which would run or govern the nation. So that is why it's very difficult to say कि इसकी एक बिगिनिंग डेफिनेट कब हुई होगी और इनका एंड कब होगा, because it's constantly moving. So Parliament will make a new law for some other rights, so you can say that now henceforth that will also be the rule of the law. ये बुनियादी अंतर होता है between written and unwritten constitution. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास लॉ नहीं है, हमारे पास लॉ है. इतना ही फर्क है कि हमारे पास एक असेंबली ने एक खास लॉ बनाया जिसको एक किताब की शक्ल दे दी गई, तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाए. और वहां पर कोई असेंबली का भी नहीं बनी क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ी, उनका कॉन्टेक्स्ट अलग था. वो कैसे इवॉल्व कर रहे थे? बाय स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन पार्लियामेंट एंड मोनार्की. इसलिए ब्रिटेन में आज भी क्या है? मोनार्की है. लेकिन लड़ाई में जीता कौन? सारी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. इसलिए वहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वेयर द किंग हु इज द हेड ऑफ द स्टेट बट इज अ नॉमिनल हेड. दैट्स द रीजन व्हाई, बिकॉज दे evolved out of these constant struggle for power between monarchy and the parliament. So it is also one of the oldest parliamentary system that we have in the world. Britain is considered as the oldest democracy in the modern world, not the ancient, because many people will say that we also have elements of democracy and institutions of democracy in ancient India. I'm not talking about that because I'm not trying to take you to history. But in the modern world, if you see, then you could say that the British had developed
a functioning democratic structure where, elected representatives used to sit, used to decide, and then, they used to make frameworks, rules, regulations, and they used to govern the nation, restricting the powers of the monarchy. Okay, so they are the ones who have done it. Pastly, they have done it like firstly. So they have some semblance of democratic structures in place. So Britain is a unique example in that sense. That is why we say it's a unwritten constitution model, because in unwritten model, you don't have a assembly, constituent assembly, which frames the constitution or have a definite beginning and a definite end. It's largely evolutionary in nature. So Britain is a history. You will see that there have been multiple revolutions, glorious revolution. And after every revolution, there is a new document which will talk about your powers, your authorities, and how you will be organizing governance. So ब्रिटेन को यही ठीक लगा, ब्रिटेन ऐसे ही इवॉल्व किया, तो ब्रिटेन को जरूरत ही नहीं पड़ी कभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, क्योंकि उनके देश को इसी सिस्टम ने बहुत अच्छा सर्व कर दिया. पर किसी और देश को हो सकता है उसकी सिचुएशन अलग थी, बिकॉज अमेरिका वॉज नॉट अ कंट्री. अमेरिका वॉज 13 different colonies. And one day these 13 different colonies came together and they said that we are going to form one nation. इसे देखो नाम क्या रखा उसका, यूनाइटेड स्टेट्स. किसके? ऑफ अमेरिका. So 13 colonies all coming together forming United States of America. Therefore, they said that how we will ensure governance in United States of America. So first सारी बातें लिख के बताओ, तब हम इसमें काम करेंगे आगे. वरना हो सकता है तुम हमारे इंटरेस्ट को ना देखो. कोई बड़ा टेरिटरी है वो कहेगा नहीं मेरी बात साथ होगी, कोई छोटी टेरिटरी है, कम आबादी है, तो वो कहेंगे नहीं तुमको तो कोई राइट नहीं मिलेगा. तो इसलिए वो बैठ करके एक संविधान लिखवाते हैं that everybody's rights, everybody's interest will be protected in this new nation called USA. And they introduced federalism where state was given, units were given powers, so that every unit, however they have lived throughout their lives, they continue to live it, and state center will not interfere. That is why division of power, separation of subjects, separation of competency, ये सारी चीजें हमने अमेरिका से सीखी. बट अमेरिका का कॉन्टेक्स्ट अलग था. अमेरिका वाज नॉट ग्रेट ब्रिटेन, जहां पर कि पहले से एक स्ट्रक्चर अवेलेबल था, एक राजा था जिसने कि एक कुछ खास एरिया में गवर्नेंस की थी, है ना, और फिर धीरे धीरे उस एरिया में लोगों को रिप्रेजेंटेटिव राइट्स मिल गए, फिर उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दिया. दैट इज नॉट अमेरिका's कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज अमेरिका वाज आल्सो ब्रिटिश कॉलोनी. Okay, that is why America would write a written constitution. So they would sit in the Philadelphia Convention, and that convention will frame the Constitution of America. While when we became independent, we also said that we will also sit in an assembly, frame the Constitution of India. So that is how we differentiate between the question of enactment. Enactment only is available for written constitution, while the word evolution is used for unwritten constitution. ठीक है, तो इसमें हमें यह बताना है कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, दे आर वर्क ऑफ इनैक्टमेंट. सो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर, सॉरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर इनैक्टेड. इसमें लिखिए, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली brings into existence, the constituent assembly, constituent assembly को CA भी लिख सकते हैं, the constituent assembly brings into existence the constitution. The constitution. Next point, it has a definite beginning. It has a definite beginning and a definite end. अनरिटन की तरफ लिखिए, जैसे इनैक्टेड लिखा तो इस तरफ लिखिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो अनरिटन होते हैं, दे आर इवॉल्व्ड. ये इवॉल्व डॉक्यूमेंट होता है. दिस डॉक्यूमेंट हैव इवॉल्व्ड, these are evolved. It evolved from multiple sources like Magna Carta
1215, Bill of Rights 1689, Bill of Rights. Next point, it is very difficult. It is very difficult. It is very difficult to trace their origin. Very difficult to trace their origin or end. ठीक है, इसमें एक बड़ा बुनियादी अंतर है, इससे आपको सब समझ में आ जाएगा. बेसिक डिफरेंस. द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर दोज कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन विल इमर्ज फर्स्ट. सबसे पहले क्या बना भारत में? कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बनाया? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. दिस इज अ प्राइमरी point of written constitution, where the constitution will emerge first and the institutions of the state will follow later, because constitution creates it. But those countries which are unwritten constitution, इन देशों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले भी बताया, पार्लियामेंट इमर्जेस फर्स्ट. अभी जो कहानी मैंने सुनाई आपको कि देयर वाज अ कांस्टेंट क्लैश बिटवीन लेजिस्लेचर एंड मोनार्की. So which means there is no constitution because there is no written document, but parliament emerged first and parliament become the source of all laws. That is why in unwritten constitution model there is supremacy of the parliament. Parliament, whatever law they have made, nobody can review it. That's supreme. If the parliament declares a male as a female, legally the person will be female, even though the person is a male. वैसा बेवकूफ वाला काम पार्लियामेंट नहीं करेगी, लेकिन ये पावर मैं बता रहा हूं पार्लियामेंट का होता है. पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया, दैट लॉ, हमारे यहां मैंने क्या कहा, ऑल लॉज नीड्स टू बी कंसिस्टेंट, शुड कंफर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट्स अ सुप्रीम लॉ. लेकिन जब पार्लियामेंट ही सुप्रीम है तो अब उसने जो लॉ बनाया उसको किसी से कंफर्म नहीं करना है. तो जुडिशरी को यह पावर नहीं है कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को वो अवैध कर दे. ये कहेगी नहीं तुम्हारा कानून ठीक नहीं है, therefore it is null and void. You don't have that power. Whatever the parliament has stated, written, made the law, that's supreme. Beyond anybody's competency to challenge and get it reviewed, or worse, get it annulled. That's not possible. That is only possible in countries which have a written constitution model. That is why in our country our judiciary is so powerful that even if you amend the constitution, the judiciary says that it is a violation of the basic structure of the constitution, therefore it is null and void. इतनी पावरफुल जुडिशरी नहीं होती हर जगह. यानी बहुत सारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैं पर उन्होंने अमेंडमेंट को जुडिशियल रिव्यू की पावर में नहीं रखा है ना. मेनी कंट्रीज हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, बट इन दोज कंट्रीज अ जुडिशियल अमेंडमेंट एक्ट कैन नॉट बी रिव्यूड बाय द जुडिशरी. Sorry, a constitutional amendment act cannot be reviewed by the judiciary. But in India, after the Keshavanand Bharati case, you would see that our judiciary has made a rule where they say that whenever it comes to amendment of the constitution, we will review it on the basis of violation of basic structure of the constitution. कहीं इस लॉ में कुछ ऐसा तो नहीं है जो संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन ये करता. मूल ढांचा मतलब ये एक बहुत बड़ा कमरा है, ठीक है. You can say that you want to make some amendment in this room. So suppose this room is a constitution. So what you will do is you will open some windows, okay. You will just run down this wall, or you will change the room. So you will start sitting from this side, the board will be that side. These are all amendments you can make. So you will take out this ceiling, increase the height of the ceiling, take out the walls, increase the size of the room, reduce it, create one more wall in between. This is amendment to the constitution. सब amendment कर सकते हैं. अब ये amendment जो हमने किया है वो ठीक है या गलत? जुडिशरी के पास आया वो केस,
जुडिशरी हैव टू रिव्यू इट, इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। हमारे देश में केशवानंद भारती में जुडिशरी ने कहा कि आप सब अमेंडमेंट कर सकते हैं, कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट की पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, आर्टिकल 368। तो इसलिए जुडिशरी ये नहीं कह सकता कि आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जुडिशरी ने कहा आप बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकते। अब ये संविधान अगर है तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? These pillars are the basic structure. The moment you take these pillars out and you start amending it, the building will crash. The constitution will come crashing down. इसलिए this is the basic structure. So those structures, और ये कौन जानता है? केवल जुडिशरी। तो जुडिशरी ने ये बताया नहीं कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशरी ने कहा कि केस टू केस बेसिस पे बताएंगे, हमें लगेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, उस दिन पता लग जाएगा दिस इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर। सो I mean, this has made our judiciary very powerful. But ये होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पावर नहीं, सिंपल लॉ को भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते, हमारी जुडिशरी के पास ये पावर नहीं। तो इसलिए मैंने ब्रिटेन में कहा पार्लियामेंट इज सुप्रीम, नोबडी कैन चैलेंज द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। व्हाट यू कैन चैलेंज इज एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अगर एग्जीक्यूटिव ने कोई काम किया है विदाउट अ लॉ तो जुडिशरी उससे बचा सकता है आपको, लेकिन अगर लेजिस्लेचर ही आपके पीछे पड़ गया तो फिर उससे कोई नहीं बचा सकता। फिर आप तब बच सकते हैं जब एक नई सरकार बने और उस कानून को बदल दे, वरना उस कानून का कोई उपाय नहीं बचने का उससे। बट ब्रिटेन है वो, ब्रिटेन में द लेवल ऑफ पीपल्स अवेयरनेस अबाउट पॉलिटिक्स इज वेरी हाई, सिविल सोसाइटीज अवेयरनेस इज वेरी हाई, सिविल सोसाइटी एक्ट्स एज अ ग्रेट रिस्ट्रेन ऑन द लेजिस्लेटर्स so that they will do no wrong, they will not even think of doing wrong, because that is the level of political awareness of the civil society, of the general population in Britain. So Britain has these checks, so they don't want another check and balance. That's why they have great, because Britain में parliament जो है उसकी बड़ी respect है, because throughout their history parliament has fought for people's rights. That is why for them parliament is supreme and they have no problem with it. लेकिन हमारे यहां हो सकता है पार्लियामेंट को अगर हम सुप्रीम बना दे तो फंस जाए। इट कुड सो हैपन, अगले दिन पार्लियामेंट एक कानून बनाया गया, बहुत बोल रहा है ये आदमी, इसको बोलो 10 दिन तक नहीं बोल सकता ये। सो द इशू इज कि दैट वी हैव टू ऑपरेट एज पर आवर ओन कॉन्टेक्स्ट, दे ऑपरेटेड एज पर देयर ओन कॉन्टेक्स्ट। सो दैट्स व्हाई देयर इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ गुड और बैड, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट सूटेड देम एंड व्हाट सूटेड द अदर कंट्रीज। सो दैट्स द मॉडल वी जनरली यूज्ड टू हैव। ठीक है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन वाले में लिखना है, द कॉन्स्टिट्यूशन इस तरफ लिखना है, रिटन वाले में, द कॉन्स्टिट्यूशन emerged first, the constitution emerged first and then the legislature executive and judiciary emerged out of the constitution. Legislature, executive and judiciary emerged out of the constitution. इस तरफ लिखिए, अनरिटन की तरफ, पार्लियामेंट emerged first, पार्लियामेंट emerged first, और यहां पर जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं यानी लॉ, दैट इज द क्रिएशन ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में व्हाट यू कॉल एज कॉन्स्टिट्यूशन इज द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नॉट द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, पार्लियामेंट emerged first and the constitution, ब्रैकेट में लिखिए लॉ, the constitution law is the creation of the parliament, is the creation of the parliament। अनरिटन वाले कॉलम में लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, हाँ अनरिटन, सॉरी रिटन वाले में, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम
इसलिए सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन का है, और यहां पर क्या सुप्रीम है अनरिटन में, पार्लियामेंट इज सुप्रीम. In this column we have to write parliament is supreme, which means legislature is supreme, not already written law, codified law, that is not supreme. But for written constitution, for us, constitution is supreme. So in India, whenever you face this question that India is based on the principle of supremacy of the parliament, supremacy of the judiciary, supremacy of the executive, supremacy of the constitution, then what is supreme here? We are a country based on the principle of supremacy of the constitution. ठीक. अभी मैंने आपको समझाया कि जुडिशरी के पास जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के देश होंगे वहां बहुत लिमिटेड पावर होगी, बिकॉज पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है. लेकिन मैंने अपने एग्जांपल में क्या कहा कि हमारी जुडिशरी के पास बहुत ज्यादा पावर होगी. तो इसलिए जुडिशियल कॉन्टेक्स्ट में भी इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होता है. रिटन में लिखिए जुडिशरी has wider and extensive powers. Judiciary has wider and extensive powers. The judiciary definitely will have wider powers. They will have extensive powers. But in a written constitution, judiciary has limited powers. इनके पास बहुत ही सीमित शक्ति आपको देखने को मिलेगी जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में. सो जुडिशरी विल हैव लिमिटेड पावर्स. ओके. और जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है, बिना किसी लॉ के अगर एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन ले रहा है तो केवल जुडिशरी उससे बचा सकती है. लेकिन अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया तो उसको जुडिशरी नल एंड वॉइड नहीं कर सकती. इस कॉन्टेक्स्ट में यहां आप देखिए कि पार्लियामेंट लॉ तो छोड़िए, अमेंड भी कर दे कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी हमारी जुडिशरी नल एंड वॉइड कर सकती है. मैं एक एग्जांपल देता हूं. हमारे यहां एक प्रपोजल आया. हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ऑल दिस पॉलिटिकल पार्टीज दे हैड अ ग्रेट कंसर्न स्पेशली आफ्टर द सेकंड जजेस केस, especially when you say that the judiciary said that whatever advice is given by, recommendation is given by the chief justice, that will be binding on the president. So ये सब हमें बाद में पढ़ना है. इसका मतलब ये हुआ कि in India we developed a concept with the second judges case which said that the appointment of the judges in high courts and Supreme Court of India, in that judiciary will have a larger say, it will have a primacy. So whatever name they will tick, suppose in layman terms, एक लिस्ट आई, जिन नामों के ऊपर उनकी रिकमेंडेशन आएगी आप उन्हीं को अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है. इसको पॉलिटिकल क्लास ने कहा कि दिस इज अ सेल्फ अपॉइंटेड जुडिशरी इन इंडिया. पसंद नहीं किया लोगों ने. लेकिन अब हमारे देश की राजनीति भी तो बड़ी कमजोर हो गई थी. कॉलिशन एरा, पूरे 90 के दशक में कॉलिशन गवर्नमेंट, अनस्टेबल अलायंसेस. Even after the end of coalition era, the judiciary by that time had become very powerful and very popular also as an institution. So the government waited for some time when one party will have majority at the center. 2014, one party majority came after so long. You can say after 1984. One of the first thing that the parliament did was they brought in an amendment to the Indian constitution. संविधान संशोधन विधेयक लाए और उस संविधान संशोधन में यह कहा गया कि जुडिशरी विल नाउ बी अपॉइंटेड बाय अ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. उसको कहा जाता है एनजेसी एक्ट. ठीक है. सो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जब ये अमेंडमेंट हो गया, उन्होंने एकदम अच्छे से डिस्कस किया पार्लियामेंट में, ओवरवेलमिंग सपोर्ट, बहुत लोकसभा राज्यसभा, ओपोजिशन क्या, फेवर में सरकार क्या, सब एक साथ. उसको चैलेंज किया. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस. And they challenged this amendment and they said that this amendment is a violation of the basic structure of the constitution. The judiciary said that yes, it is a violation of the basic structure of the constitution. यानी null and void, पूरी amendment null and void. तो सरकार ने पूछा अब हमने क्या वायलेट कर दिया? जुडिशरी ने कहा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जुडिशरी का अपॉइंटमेंट है, जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में
सबसे प्राइमेसी जिसकी ओपिनियन की होगी वो होगी जुडिशरी की। उन्होंने कहा रखा तो था, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे स्ट्रक्चर में, मैं समझाऊंगा जब इस केस के बारे में बात करूंगा, स्ट्रक्चर में थोड़े फॉल्ट्स हैं। वी कांट कॉम्प्रोमाइज द independence of judiciary, because if judiciary is not having a primacy of opinion in the appointment of judiciary, then we could see a time in the country when independence of judiciary could be severely compromised. So it's null and void. This is the wide and extensive power that I'm talking about, that your judiciary will have, because you are a written constitution. And independence of judiciary is considered as a basic structure of the constitution after this particular judgment. होगा तो पहले से, लेकिन इस जजमेंट ने इस बात को एस्टैब्लिश किया that one of the basic structure of the constitution is also independence of judiciary. ऐसा बोम्मई केस हुआ, one of the basic structure of the constitution is secularism. तो ऐसी बात है, जुडिशरी अलग अलग निर्णय में कहती रहती है, बट ये पावर आपको कहां से मिला? फ्रॉम the written constitution, because in the written constitution, the judiciary has a power to judicially review a law passed by the parliament, an action taken by the executive. उसको रिव्यू कर सकता है। जहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर पार्लियामेंट के किसी लॉ को रिव्यू नहीं कर सकता। जुडिशरी कैन ओनली रिव्यू एग्जीक्यूटिव एक्शन, और वो भी नल एंड वॉइड वो तब करेगा जब वो एक्शन बिना किसी लॉ के कर रहा हो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव। अगर कोई लॉ के साथ वो कर रहा हो तो कुछ नहीं कर सकता वहां भी, बिकॉज देयर द सुप्रीमेसी इज दैट ऑफ द लेजिस्लेचर। जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो सबसे सुपीरियर होता है उनके कॉन्टेक्स्ट में। आई बात समझ में सबको? सो यहां पर जुडिशरी हैज लिमिटेड पावर, बट हियर जुडिशरी हैज वेरी वाइडर एंड एक्सटेंसिव पावर। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर थोड़े थोड़े देश में अंतर है, इसलिए मैं यहीं पर बात को लिख देता हूं, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में इंडिया भी लिखा है। इंडिया में अमेंडमेंट इज नॉट वेरी टफ। वी हैव बोथ मॉडल्स ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सम मॉडल्स where we have to amend the constitution is very tough, but there are also flexibility. We can easily amend certain provisions of the constitution also. 368 में इसके बारे में बात होगी, क्योंकि 368 is about a provision for amendment of the constitution. ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ही पढ़ लेंगे हम लोग अमेंडमेंट की प्रोसीजर। लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि इफ यू लुक एट अमेरिका, डू यू नो हाउ मेनी अमेंडमेंट्स अमेरिका हैव मेड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन? एक गेस करो। When did Americans have the Philadelphia Convention? 1789. तो 1789 में संविधान मान लो अमेरिका का आ गया, ठीक है, 18th सेंचुरी। भारत में कब बना? मिड 20th सेंचुरी, 1947। तो हमसे तो लगभग कुछ नहीं तो कम से कम कितना कह सकते हैं कि 170-80 वर्ष पहले का संविधान है। तो उनके यहां तो कम से कम 250-300 अमेंडमेंट होने चाहिए कम से कम, मतलब अगर हमारी रफ्तार से कंपेयर करें तो। हाँ नहीं, अमेरिका के संविधान का अमेंडमेंट मात्र 27 बार हुआ है अब तक, 27। इसका मतलब है एक जनरल प्रिंसिपल होता है। उसका एक ये भी कारण है कि अमेरिका में डुअल कॉन्स्टिट्यूशन है, हर राज्य का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ बहुत बार तो राज्य और केंद्र के सबके संविधान तो हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, अब सारी स्टेट की भी सारी पावर वहीं लिखी, तभी तो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब लोग बेमतलब क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई इतना लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, तो क्या करें, पूरे राज्य की भी सब कुछ, पूरी अथॉरिटी राज्य की भी जो दी है वहीं से दी है। अमेरिका में उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज ओनली टॉकिंग अबाउट सेंटर, यूनियन, यूएसए, while every state have their own constitution. So there is a difference in America's state constitutions, and whatever is not written in the constitution on that issue, the state is free to take decision. हमारे यहाँ जो संविधान में नहीं लिखा हुआ है, अगर उस पर निर्णय लेना है तो कौन लेगा? सेंटर। उसको कहते हैं रेसिडियरी पावर। जो बच गया, रेसिडियरी मतलब बचा हुआ, तो मान लो संविधान में हमने लिख दिया कि स्टेट लिस्ट में इतने सब्जेक्ट, सेंट्रल लिस्ट में इतने सब्जेक्ट, टर्शियरी में इतने सब्जेक्ट, सपोज कुछ चीजें जो नहीं लिख पाए, वर्ल्ड इवॉल्व्स, चेंजेस, सोसाइटी चेंजेस, कंकरेंट लिस्ट लिखा हुआ होता है उसमें, so it changes. Now who is going to take a decision on a new subject which is not mentioned anywhere in either of the three lists, union, state or concurrent list?
So only parliament can take that decision. But in USA, they say that no, residuary power will be with the state. So state has been given more authorities. That's the idea of a federation. Federation is suitable for written constitution. But India में थोड़ा सा परिवर्तन है. इसीलिए on this issue of amendability or amendment of the constitution, so largely we can say that written constitutions are very rigid to amend. There is rigidity, but बहुत tough process होता है to amend the constitution. That is what called rigidity. Unwritten constitution बहुत flexible है. इन पार्लियामेंट को ही तो करना है ना, तो पार्लियामेंट ने सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर दिया, एक नया कानून बना दिया. मतलब अमेंडमेंट तो वहां कुछ है ही नहीं उस तरह से. पार्लियामेंट जैसे लॉ बनाता है वैसे एक और लॉ बना देगा, बदल देगा उसको. तो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल. पार्लियामेंट जो चाहे जब चाहे कर सकता है. लेकिन हमारे यहाँ या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी रिजिडिटी होती है. इंडिया इज अ क्लासिक केस बिकॉज वी आर अ नेशन with a parliamentary system but also elements of federation. So we have rigidity plus flexibility also. For example, you want to change something in citizenship. Even if you change it, that is not considered as amendment. So you can change it, it will be an amendment, but not under 368. You can do it by simple majority. You want to create a new state, Kashmir, already existing state. And now you said that Kashmir will be divided and 2 union territories will emerge out of Kashmir. Did you amend the constitution? Not required. Although it is technically an amendment because you create 2 new union territories, you take away a state, तो संविधान में लिखना होगा ना जाके, तो amendment हो गया. Amendment का मतलब क्या? Any change in the constitution. Even if you introduce a comma or a full stop, that is an amendment to the constitution. You can't do it without constitutional amendment bill. But if you are reorganizing the state, the constitution says that this will not be part of amendment under 368. Because amendment rule is written under 368. How you have to amend the constitution? 2/3 majority, both the house. If it's a federal provision, which means if the issue concerns the state, half of the state legislature also has to pass it by simple majority. For example, GST. GST was a tax reform introduced in the country. When you pass the GST amendment in the constitution, parliament passed it by 2/3 majority, but that was not enough. Half of the state has to pass it, ratify it by simple majority. Although every state did it, but that is the requirement. You introduce Panchayati Raj, 73rd Amendment. Who will introduce Panchayati Raj? It's a local self-government. It's a matter under state list. So, even if the parliament brought the amendment, but half of the state has to ratify it. This is called rigid provision, where you require special majority to amend the constitution. But in our country, there are some amendments that can be done even without special majority. That is why in our country we say that we have a blend of rigidity and flexibility. तो इसलिए हम ये लिखेंगे यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कि इट इज रिजिड एज वेल एज, ये हमारे केस में खास तौर पे है. रिजिड शब्द अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं हम, पर हमारे यहाँ भी रिजिडिटी है. कुछ प्रोविजंस के लिए रिजिड है हम, बट बाकी कुछ प्रोविजंस के लिए हम फ्लेक्सिबल भी होते हैं. सो इट इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल टू amend the constitution. So it's rigid and flexible when it comes to amendment of the Indian constitution. There are so many provisions which can be easily amended. That is, amendment can be done without using special provision of Article 368. By ordinary majority also you can amend Part 1 and Part 2. Plus there are so many other areas in the constitution where you can do it by simple majority. उसको कहते हैं flexible. लेकिन बाकी जगह पर स्पेशल मेजॉरिटी है तो थोड़ी रिजिड भी है ना. अमेरिका में थोड़ी और ज्यादा रिजिड है, क्योंकि अमेरिका में एक तो पहले आपके पास स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, प्लस जो स्टेट हैं उनको भी स्पेशल मेजॉरिटी से उसको अप्रूव करना है, और हाफ नहीं 3/4 ऑफ द स्टेट्स. तो अमेरिका हैज गॉट वेरी रिजिड वेज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए अमेरिका में अमेंडमेंट करना उससे आसान है नया संविधान लिख देना, तो वो अमेंड नहीं करते. ठीक है. बट इफ यू लुक एट अनरिटन मॉडल, दे आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल. ये कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा फ्लेक्सिबल होता है. क्यों फ्लेक्सिबल शब्द यूज किया मैंने? क्योंकि यहां पर कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई किताब ही नहीं, कोई संविधान ही नहीं. सो इफ यू रियली वांट टू अमेंड अ लॉ इज अमेंडेड बाय जनरल ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, यानी टोटल मेंबर्स प्रेजेंट ½ + 1.
दैट इज सिंपल मेजोरिटी। और कोई भी लॉ ऐसे ही बनता है, हमारे देश में भी कोई कानून बनेगा तो कैसे बनेगा, सिंपल मेजोरिटी से बनेगा ना। अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लेकिन अगर कानून बना रहे हैं हम संविधान के लिए नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रेगुलेशन के लिए, तो कानून कैसे बनता है, सिंपल मेजोरिटी से। लेजिस्लेचर सिंपल मेजोरिटी से कानून बनाता है। तो वही लेजिस्लेचर जब सुप्रीम है तो इन दोज कंट्रीज इट इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल, बिकॉज इफ दे वांट टू चेंज अ लॉ दे विल चेंज द लॉ, दे विल राइट अ न्यू लॉ, पार्लियामेंट विल पास इट, नो स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड, simple majority is enough. That is why in those countries you can change the rules, the laws very frequently, because there is no document called constitution. Whatever parliament creates is as good as the constitution of that particular land. Okay, that's why we say it is rigid. The first part we said rigid plus flexible, this is always flexible. Now we see the other equation. जो written constitutions होंगे, these written constitution nations can be federal or unitary. ये दोनों तरह के हो सकते हैं। ऐसा एग्जांपल क्यों दे रहा हूं मैं, because when I look at unitary constitutions there are so many countries which have written constitution but they are still unitary. The classic example is our neighbor Sri Lanka. Sri Lanka is also a written constitution but it's a unitary state. तभी तो लड़ाई है, रिजॉल्व नहीं हो पाया। But the Tamilians are demanding self-governance rights. They are demanding that their language and their culture should be given acceptance in the constitution. हमारे देश में क्या है, 22 लैंग्वेज को हमने 8 शेड्यूल में डाल रखा है, which means the Indian constitution does not talk about any language which is the national language, but it talks about official languages, and we have 22 recognized official languages per the constitution. But think about Sri Lanka. In Sri Lanka there's no recognition to Tamil language. You only have to recognize one language, that is the Sinhala. That's it. So they have a very institutionalized way in which they have been discriminating and subverting the Tamil identity and culture. Okay? So what will happen? Those countries, because they are unitary nations, they demand that there should be some federal arrangements. And for that, there was a Jayawardene-Rajiv Gandhi Pact, 1985. And that wanted to introduce an amendment that has brought an amendment in the Sri Lankan constitution. That is called 13th Amendment. And 13th Amendment talked about devolution of power to the north and eastern Sri Lanka, that is the Jaffna Peninsula and the eastern territory where there is a substantial Tamilian population. That is the solution to that question. But because it's a unitary state, it was never implemented. They never devolved this power to these areas. And therefore, there has always been this problem that Sri Lanka has witnessed. But Sri Lanka is a classic example of a unitary country with a constitution. इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा फेडरल ही होंगे। हम क्या है, we are a classic example of a parliamentary country with a federation, and the federation is more tilted towards the center. So we can't say that we are a unitary state because we have two forms of government duly created by the constitution. But who has more power? Center. So we have some unitary features. ये हमें पढ़ना है, समझना भी है gradually. तो इसलिए for written constitution it could be a federal or even a unitary constitution. It is like both types of states could emerge out of a written constitution. But if you see an unwritten constitution, it will always lead to the creation of a unitary form of government. Unitary state ही बनेगा वहाँ, because that is the classic model of a unwritten constitution. क्योंकि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है। पार्लियामेंट अगर कोई नया डिवॉल्व करेगा पावर तो ही डिवॉल्व होगा, जैसे ब्रिटेन में भी है ना, वहाँ पे काउंटीज हैं, बोरोज हैं, उनमें जो भी पावर डिवॉल्व करते हैं ये पार्लियामेंट करती है, because there is no written constitution over there. So parliament is supreme, they decide. So it's very unitary, unitarist in orientation. वहां पर ऐसे असेंबलीज नहीं होते हर प्रोविंस में, जैसे हमारे यहाँ हर राज्य के चुनाव होते हैं। कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है राज्य का चुनाव। अभी लोग यूपी की तैयारी में लग गए, अगला चुनाव होने वाला है, सबसे बड़ा राज्य है हमारे यहाँ। तो वहां पर ऐसा कुछ, वहां पर एक ही चुनाव की सबसे बड़ी तैयारी होती है और वो है दी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। उसके बाद थोड़े पावर्स दिए गए टू मेयर्स एंड अदर्स हु गवर्न एट द म्युनिसिपल एंड अदर लेवल्स, दैट्स इट।
So you can't have these kind of assemblies. Every provinces will have their own separately constituted elected members representing their state constituency. No, the whole country is one and everybody is represented in the parliament. That is what the parliamentary election is all about. Why? Because in parliamentary election, the entire country votes and elect their representatives from their constituency. जो हमारे लोकसभा में भी होता है. In Lok Sabha, every length and breadth of the country have their representative. Union territory हो, state हो, कोई भी territory हो, हर territory को एक constituency में बांट दिया जाता है और वहां से एक representative लोकसभा भेज दिया जाता है. Okay? तो unitary state में ये काफी है. Federal state में ये काफी नहीं है. Because federal state believes in the formula of self rule and shared rule. Because they also want to share the rule, so they'll go to the center, sharing power. And they will have self rule also. That is, within their state, they will themselves rule. They will not say center should come and rule on our behalf. That is the model in federation, self rule and shared rule. ये unitary state में नहीं होता. Unitary state only has the concept of self rule. There is nothing called a shared rule concept over. Sorry, only they have a concept of shared rule. There is no concept of a self rule because they do not see it as a viable, political necessity in the model of a unitary state. Okay, so that is why in the written constitution you will see, and it's a very important point, there is a distinction between, distinction matlab difference, there is a distinction between constitutional laws, there is a distinction between constitutional laws and other laws. अभी हमने कल देखा था, what were other laws? Laws made by the legislature, or an ordinance, or a rules, or a notification, or a bylaw. But everything is different from constitution or the constitutional law. ये पढ़ा था ना हमने? So this is a primary distinction. All the laws that you make, there is a distinction between the constitutional laws and other laws. But in unwritten constitution, there is no distinction between constitutional laws and other laws. All laws are made by the parliament. तो इसलिए वो constitutional law भी है, वो general ordinary statutory law भी है. You can't make the distinction. हमारे यहाँ you can make the distinction. You say that what parliament has made is a statutory law. While you can't say the same in England. So for them, there is no distinction between constitutional laws and other laws. Laws means laws over there. There is nothing called a constitutional law, which may differentiate between supreme law of the land and other laws, because there the parliament is supreme. Okay, that's why we can say no distinction between constitutional laws and other laws. Okay. That's how we look at into certain areas. इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक शब्द आता है पॉलिटिकल स्टडीज में, कन्वेंशंस. कन्वेंशन का मतलब होता है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. कुछ चीजें हैं जो हम परंपरा से करते आ रहे हैं, परंपरागत, उसको फॉलो करते आ रहे हैं. ब्रिटेन में जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां पर कन्वेंशन का बड़ा महत्व है. एवरीथिंग दैट दे विल डू इज दे विल फॉलो द कन्वेंशंस, because so many process in the parliament will take place. Suppose there is no written rule about it, so they will just look at how we were doing it in the older times. So it's a practice, traditional practice, so they will follow it. They will not say that no, we have to just not follow it because it is not written in the rules. Unwritten constitution relies so much on or gives so much of importance to conventions. Conventions is traditional practices. But countries which are written constitutions, they do not give so much of importance to conventions. They rely more on provisions. जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, यूपीए का शासन था, तो यूपीए के शासन में उन्होंने एक कन्वेंशन बनाया और उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब रूलिंग पार्टी के होंगे. अभी स्पीकर साहब हमारे हैं, अविश्वास प्रस्ताव उन पर लाने के लिए सारी जो तैयारी है वो कर लिया ओपोजिशन ने. मैं कहा भाई ये स्पीकर हमें स्वीकार नहीं, बट ओपोजिशन के पास नंबर नहीं होता ना, तभी तो वो ओपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो वो ला सकते हैं, हटा नहीं सकते, क्योंकि वो बने किसकी वोट से, रूलिंग पार्टी.
तो स्पीकर हमेशा रूलिंग पार्टी का होता है ना। ये कन्वेंशन जैसा है, यानी स्पीकर किस पार्टी का होगा, रूलिंग पार्टी का होगा। इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मान लो स्पीकर का चुनाव ही हार गए आप, तो फिर इसका मतलब आपका मेजोरिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट विल हैव टू रिजाइन। यूपीए ने कहा कि डेप्यूटी स्पीकर ओपोजिशन का होगा, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, बैलेंस बना रहे। तो एक कन्वेंशन था, रूल्स में नहीं लिखा हुआ है कि डेप्यूटी स्पीकर हैज टू बी फ्रॉम दी ओपोजिशन। ये एक कन्वेंशन की शुरुआत हुई, परंपरा कि चलो ठीक है, स्पीकर रूलिंग पार्टी तो डिप्टी स्पीकर ओपोजिशन पार्टी का। 2014 न्यू गवर्नमेंट कम्स टू पावर। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि डिप्टी स्पीकर ओपोजिशन का होगा, नहीं लिखा हुआ है सर, तो कहा हमारा होगा, और बाद में होगा ही नहीं। ठीक है, अभी हमारे पास है ही नहीं डिप्टी स्पीकर, एक टर्म हुआ, फिर 19 के बाद से डिप्टी स्पीकर है ही नहीं, एक स्पीकर होता है बस, कहता बस। बाकी हमारे यहाँ जो एक दूसरी एक रूल्स में लिखा हुआ है दैट वी कैन हैव पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, वो पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स होते हैं। इफ द स्पीकर इज नॉट देयर, द पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स गो एंड प्रिसाइड ओवर द सेशन। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इंग्लैंड होता तो दे विल हैव फॉलोड द कन्वेंशन, बट इन इंडिया देयर इज नथिंग रॉन्ग बिकॉज यू हैव टू फॉलो द प्रोविजंस, not the conventions. So conventions cannot tie your hands, because here the more prominence is given to the constitution provisions, or rather provisions, than anything which is a traditional practice. That's the basic difference. ठीक है, written की तरफ लिखिए, it is governed more by provisions and less by conventions. Unwritten की तरफ लिखिए, it is governed more by convention. So convention is very, very important for them. ये कॉन्स्टिट्यूशन का समझ में आया? सो कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली दैट डॉक्यूमेंट विच establishes a supreme law for the governance of the country, that gives life and breath to a state, that gives you rights as well as duties as a citizen of the country, which means it establishes your relations between the state and the people of the country. Plus it has some essential characteristics. In the classification part we have seen the larger difference between a written and unwritten constitution. So that is more or less a very general introduction of what we have to know about constitution and the classification or varieties dealing with the idea of constitution. Now there remains a question that is still to be answered. That is called why constitution? ये हमें जानना है, संविधान क्यों चाहिए आप? Why do you need a constitution? And for that, there has to be a discussion over certain elements with respect to the understanding of the constitution, in the sense that why constitution is required, and for that we have to understand some very basic idea. तो अब हम थोड़ा सा क्या है, अब हम थोड़ा सा थियरी पे जाएंगे to understand that why we actually need a constitution in the first place. So we need the constitution. तो हमें पढ़ना क्या है? We have to understand the idea of constitutionalism, संविधानवाद, इसकी जरूरत है हमें। संविधानवाद अगर नहीं है तो फिर समझ लो कि आपकी और हमारी कोई भी अधिकार सुरक्षित नहीं। ठीक है, संविधानवाद इज, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. It is not natural or it is not given that if there is a constitution there will be constitutionalism. No, these are two different ideas.
The manner in which you create your constitution will ensure that is there constitutionalism or not. ठीक है? There are so many countries where there will be constitution, but which means there will be rules, regulations, written orders, पूरा एकदम document होगा. But you can't say that the country is still operating under constitutionalism. I'll give you one example so that you understand it. When in South Africa there was apartheid, apartheid was a practice in South Africa where the minority whites, they had all rights while the blacks had no rights, which means blacks had no democratic rights. They cannot fight elections, they cannot govern, they cannot go into administration, and they were not given any citizenship rights. Only whites, they were given citizenship status and rights, while there was a policy of institutional policy of segregation where whites and blacks, they had everything, every facility which was different. Different schools, different places, different dwelling places, different restaurants, everything different. Okay, so it was a practice called apartheid. Apartheid was not something which was uncommon there, because in the South African constitution at the time, they have created that this is what their constitution is all about, which means constitution was a discriminatory clause or a discriminatory document. The constitution was saying that it is legal to discriminate with the blacks. So can you say it was rule of law? You can say it was ruled by law, but it was not rule of law. Similarly, today if somebody says that even Afghanistan has a constitution, then you very well ask the question that even if they have a constitution, is there constitutionalism? Because there are so many authorities who have unbridled powers. China will say, I have a constitution. China has a constitution. But is there constitutionalism in China? No, because in China, the different organs of the state, they are not very independent. There is a Politburo of the party that has got a major control over all the institutions. So judiciary is compromised, judiciary is not independent. Even the legislature is not very independent. And there is no, why will there be independence? Because there is no multi-party system. So there is no opposition. सोचो आपका शासन है और कोई ओपोजिशन नहीं है. जैसे अभी सरकार को कितनी दिक्कत हो रही है, ओपोजिशन ने एकदम क्लास लगाई हुई है सरकार की कि हमें बोलने दो, हमें नहीं बोलने दोगे तो सदन नहीं चलेगा. तो सरकार को प्रॉब्लम हो रही है ना, यानी तो आप ओपोजिशन से बात करोगे, यू विल ट्राई